Hello everyone, this side Sarika, your maths teacher. Welcome to my channel Sarika Krishna Online Classes. If you have not subscribed my channel, please do the honor. Okay, so now in this video I'll be explaining mensuration of class 8, right? Mensuration, what is mensuration? Mensuration is all about calculating the area, perimeter, surface area, total volume, total area, lateral area, right? All these calculations, this comes in the chapter mensuration, right? So there are different geometric shapes. So in NCERT, the first exercise, some formulas are required, right? So the formulas of these geometric shapes, which are the simple ones, they are required, right? So these are the geometric shapes: square, rectangle, triangle, parallelogram, circle, equilateral triangle. You might be familiar with these figures in your junior classes, right? So first, for the first exercise, I'll be explaining the formulas: area, perimeter. What do we calculate about these figures? These shapes, area and perimeter. What is area and what is perimeter? Perimeter is just the calculation of the outer boundary, like it is a square, sum of all the four sides, right? And what is area? Area is the area which is covered by the whole that figure, right? It is not just the outer boundary, right? Now comes the square. What is the perimeter of a square and what is the area of a square when the figure is this, right? This is a square having the side A, right? All square has all equal sides. अगर उसकी sides A है, on basis of that, what is perimeter? It is 4 into sides, 4 into A. क्यों मल्टीप्लाई किया 4 into A? बिकॉज उसकी साइड सारी इक्वल होती है. आप 4 टाइम्स A को ऐड करोगे, A plus A plus A plus A, that is 4A only, right? So 4 into side. What is area? Area, as the side is same, area is length into breadth. So length is also same, breadth is same. They both are equal, A and A. So side into side, that is A square, right? जो side यहाँ होगी वो यहाँ होगी, right? So the area will be A into A. I hope it's clear. Then comes the next shape, geometric shape, is rectangle. Rectangle, it has different length, different breadth. दो length same होती है, breadth same होती है, right? So what is the perimeter? Perimeter is just the calculation of outer boundary. L plus B plus L plus B. L भी दो बार आ रहा है, B भी twice आ रहा है, right? So हम इसको short में लिखते हैं twice of L plus B. L का भी twice, B का भी twice. So हम L और B को पहले add up करते हैं और फिर उसको double करते हैं, right? Because L is coming twice, B also coming twice. This formula is clear. Then comes triangle, right? So there are different types of triangles also, right? If we have a triangle having height, or we can say that a right triangle. Right triangle also have a height perpendicular 90 degree. Or अगर कोई general triangle है, then you can drop a perpendicular there. That is also kind of right triangle, right? So what is the perimeter? Perimeter will be the sum of the sides, right? Here perimeter here in this case here will be A plus B plus C. If the sides are A, B and C, right? A, B, suppose this is C. So addition of all the three sides, that is the perimeter, right? Then comes the area. Area is half multiplied by base, right? And multiplied by the height. So base has to be there, not the hypotenuse, right? So like perpendicular is dropped on this side. So this is the base. बेस वो होता है जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड होता है. परपेंडिकुलर इज ड्रॉन दिस वे, तो ये बेस होगा. अगर परपेंडिकुलर उधर को ड्रॉन है तो उधर जिस लाइन पे ड्रॉ होता है, right, on which that perpendicular drops, that is the base, right? So here half into base into height is the area of a right triangle. Then comes parallelogram. Parallelogram, this type of figure, two sides are parallel. ये parallel होती हैं, उधर की sides parallel होती हैं, equal भी होती हैं, right? So perimeter same होता है जैसे rectangle का है, right? ये साइड सेम होंगी बी बी और ए सेम होगी. इट इज काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड सेम होती है. तो आप जब ऐड करोगे ए प्लस ए बी प्लस बी तो वो डबल हो जाएगा, राइट? ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी, दैट मीन्स ट्वाइस कॉमन करके ए प्लस बी. पेरीमीटर क्लियर है. सम ऑफ आउटर बाउंड्री. एरिया होता है बी इंटू एच. ट्राइंगल जो होता है दैट इज हाफ, बट पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट, उसमें वी डोंट मल्टीप्लाई बाय हाफ. ठीक है, सिर्फ बेस और हाइट लगती है. हाइट जहां को ड्रॉप्ड होगी वो ही बेस होगा. अगर सपोज आई एम ड्रॉपिंग दैट हाइट दिस वे, अगर यहां से हाइट ड्रॉप्ड है इस लाइन पे, ये हाइट ड्रॉप्ड है, देन दिस विल बी द बेस. जिस पे हाइट ड्रॉप्ड है दैट इज द बेस.
अगर हाइट इधर को ड्रॉप्ड है तो b विल बी द बेस, अगर हाइट उधर को ड्रॉप्ड है तो वहां a लगाना पड़ेगा बेस की जगह, राइट? आई होप इट इज क्लियर। जहां को हाइट बनी होती है वो बेस होता है, राइट? सो बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। देन कम्स द सर्कल। सर्कल राउंड सर्कल होता है। वी शुड नो व्हाट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। सेंटर से यहाँ की लाइन दैट इज कॉल्ड अ रेडियस, और अगर रेडियस का डबल करे दैट इज कॉल्ड अ डायमीटर। वी शुड नो द टर्म्स। ये डायमीटर होता है, और जो डायमीटर दैट इज डबल ऑफ द रेडियस, या रेडियस बोले तो half of the diameter. So you should know the terms. What is radius? Radius is the distance from the center to the point on the circle. Diameter is a line passing through the center. तो diameter डबल होता है रेडियस का, बट फॉर्मूला में हम रेडियस यूज करते हैं, राइट? सो सर्कल का पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, सी मीन्स द सर्कमफ्रेंस, दैट मीन्स द सेम थिंग। पेरीमीटर मीन्स आउटर बाउंड्री, हम उसको सर्क्यूमफ्रेंस भी बोलते हैं, सी। सो पेरीमीटर 2 पाई आर और सी इज इक्वल टू 2 पाई आर means the same thing. Area means pi r square. Pi value you can use 22/7, or it is given in question 3.14, right? So pi की हम value डालते हैं question में, r डालते हैं, radius given होता है, right? So pi r square is the area of a circle. Now the next is equilateral triangle, right? We have talked about here right triangle जिसमें perpendicular होगा, वो ये वाला right triangle, ये वाला right triangle, kind of right triangle only. Right triangle means you have the perpendicular dropped in that outside, या अंदर भी हो सकता है, बाहर को भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, right? Now what about if it is an equilateral triangle? What do you mean by the equilateral triangle? Equilateral triangle means all sides are equal. Okay, if the all sides are equal, then we drop a perpendicular there, right? It is not required in the formula, but I've just dropped. Equilateral triangle में जो perimeter होगा a plus a plus a, that is 3a, क्योंकि sides तो same होती है. So you just have to add up all the three sides and you'll get a perimeter. What about the area? Area, this formula has been derived, but in 8th class you don't need this derivation. So directly learn the formula. What is the area? Area is √3 upon 4a square. जो root है that is only on 3, not on 4. 4 root से बाहर है, so √3 upon 4a square, right? Either you leave the answer in root, अगर आप क्वेश्चन में ये वैल्यू डालते हैं तो रूट में आंसर छोड़ देते हैं, अगर नहीं डालते हैं तो √3 की कुछ वैल्यू होती है 1.73. It is mentioned in the question, I think. If it is not mentioned, we can learn that, right? So children, I hope these geometric shapes and their perimeters and their areas, they are clear, because these formulas will be required for the first exercise of NCERT, mensuration, first exercise of NCERT book, right? So you can learn these, right? Daily you can revise. Now let us do the questions, children. Okay, students. Now 11.1 of NCERT, right? So we'll be doing, this is the first question. What is the question? This is a square, this is a rectangle, side of the square is 60 meter, and this length of the rectangle is 80 meter, breadth is not given. And what is given? It's given that perimeter is same, perimeter of a square is equal to perimeter of a rectangle. In दोनों का perimeter same है, right? And what you have to find, which field has greater area, right? Which field has greater area? Which field has greater area? You have to find the area. Now first we'll be using this, what is given, area of a square, perimeter of a square, that is 4 into side. We'll write the formula first, and here it is length plus breadth, right? Okay, now 4 into side, what is side? 60. Okay, here length is given 80, breadth is not given, right? So just multiply this, 4 6 are 24 to 40. Just multiply this by this also and this also. जो bracket के बाहर होता है, the number which is outside the bracket, you are supposed to multiply with all the terms inside. So 2 into 80 is 160, 2 into b is 2b, right? I'm writing this side. So 2b plus 160 is equal to 240, right? So now 2b is equal to 240 minus 160 goes to that side with a change of sign, right? Solving the equations. Now 2b is equals to, here it becomes 80. 240 minus 160 is 80. Now we'll be doing here. So 2b is equal to 80. So b will be equals to 80 divided by 2. If you cancel, so the breadth comes out to be 40. So the breadth of the rectangle is 40. Now you are supposed to compare the areas. So for that we need to calculate the areas. Now let us calculate.
area of a square. You should know the formula, right? Formula is side into side, that is a square. So what is a here is a 60. So just substitute 60, 62 times. 6 6 are 36, 0 0. Right here it's meter, so meter square. So what is the area of a square? That is 3600 meters, right? Now we have to calculate the area of a rectangle. So area of a rectangle, first we need to write the formula, that is length into breadth. Length is given 80 meters and breadth we just found here by calculating. So it becomes 8 4s are 32, 0 0 meter square. So which has a greater area? Which figure has a greater area? Square. So square has a greater area. So what is the answer? That square has a greater area. So I'll repeat this question again. We have two types of figure, square and a rectangle. Length of side of the square has been given, length of the rectangle given, but the breadth is not given. So what is given? That their perimeters are same. Applying the formula of perimeter, 4 into side, perimeter for square. Twice length plus breadth, perimeter for rectangle. Just substitute the values of here, square की side just substitute, length substitute करो, b हमारे पास नहीं है. इसको मल्टीप्लाई करो, जो ब्रैकेट के बाहर होता है, राइट? हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, उसको इंटू करो इसके साथ भी और इसके साथ भी. 80 इंटू 2 160, 2 इंटू बी 2b, राइट? अब ये इधर को लिख दो, उधर को लिख दो थोड़ा सा क्योंकि b है. सो 160 कम्स टू दिस साइड एंड सबट्रैक्ट विद 240, 80 आ गया और बाद में 80 से 2 डिवाइड करेंगे तो वी गेट b. तो हमारा b आ गया 40. मीन्स नाउ द ब्रेथ हियर इज 40 मीटर. नाउ यू हैव टू कंपेयर द एरिया. उसके लिए आप एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला लगाओ. एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, साइड इज 60, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमारे पास थी, ब्रेथ हमने कैलकुलेट कर ली, आंसर आ गया. कंपेयर किया 3600 इज ग्रेटर देन 3200, right? It means 3600 is greater than 3200. So square has a greater area क्योंकि square का आंसर greater आ गया area. I hope the first question is clear. Now we'll be doing the next one. Okay. Now the second question of this exercise 11.1 is this one, right? So what is here? Mrs. Kaushik, right? She has a square field. This is a field and it is a square, 25 into 25, same side, right? So there she made a house that is a rectangular form. That is in rectangular form. It is a rectangle, 20 length and breadth is 15, right? So in the rest portion, right, she has developed a garden, right? So that garden, its cost has to be calculated for developing a garden, right? So the cost of 1 meter square is given rupees 55. This is all about what is given part, right? So now you have to write the side of the square field, that is 25. Given things you have to write. Length of the house, that is 20. Breadth of the house, that is 15. You have to write all the given things. Then what you have to do, how can you find the area of this garden? First you need to find the area. When you will find the area, then you will multiply by per meter cost. 1 meter की cost से आप last में जाके multiply करोगे. पहले आपको निकालना है area. How can you find that area? Area of this portion, जब भी ऐसा कुछ band हो बीच में, right? How do you find? If you have a paper, right? आपने उसमें बाहर वाला portion है, अंदर वाला portion है, आपको सिर्फ वो boundary चाहिए, तो आप क्या कर देते हैं? अंदर वाले, बाहर वाले से अंदर वाला पार्ट आप कट कर देते हो, तो आपके पास वो बॉर्डर बच जाता है. सो मीन्स यू हैव टू सबट्रैक्ट हियर. अगर आप बाहर वाले से फील्ड से इतना पोर्शन कट कर देंगे, निकाल देंगे, तो आपके पास वो बॉर्डर रह जाता है, राइट? इट मीन्स एरिया ऑफ अ गार्डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ द हाउस फ्रॉम एरिया ऑफ द फील्ड. फील्ड में से हाउस का एरिया हम माइनस कर देंगे एंड वील गेट द एरिया ऑफ द गार्डन. एरिया निकालेंगे, उसके बाद ही कॉस्ट निकालेंगे, राइट? सो लेट अस डू दैट. एरिया ऑफ द फील्ड, अब फील्ड आपकी क्या है? स्क्वायर, साइड इनटू साइड, 25 into 25, दैट विल बी 625 meter square, right? Area of a house, house is in the form of a rectangle, length into breadth, length 20 and 15, multiply करो उसको, 15 2s are 30, 300 meter square. 25 25 625, right? Squares आने चाहिए. Then comes area of the garden. That is area of a square field minus area of a house. Area of a square field से आप area of a house subtract कर देंगे, right? Means इस field से आप ये house का
एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड? दैट इज 625 मीटर स्क्वायर, राइट? ये वाला. इसमें से आप माइनस करोगे 300 मीटर स्क्वायर. सो आपका कितना आ जाएगा? 33600, 325 मीटर स्क्वायर. तो आपका जो टोटल एरिया ऑफ द गार्डन है दैट इज 325, राइट? अब एरिया आपका आ गया. हाउ टू फाइंड द कॉस्ट फॉर डेवलपिंग दैट? जब आपके पास एरिया है, आपको इट्स गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 55, बिकॉज वहाँ लिखा ₹55 पर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर क्या होता है? यूनिट ऑफ एरिया. आपके 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट इतनी है, तो आपके पास कितना एरिया है? 325. जस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट, राइट? सो हियर 55 से आपको 325 मल्टीप्लाई करना है. तो आपका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 17,000. आंसर यू कैन कैलकुलेट 875 रुपीज. ठीक है. सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन. पर मीटर की कॉस्ट एंड द टोटल एरिया ऑफ द गार्डन. So answer comes out to be 17,875. I'm repeating this question again. आपके पास एक मिसेस कौशिक है, या मिसेस कौशिक, राइट? मिसेस कौशिक के पास शी हैज अ स्क्वायर फील्ड है उसके पास. उसने उसमें बीच में हाउस बना दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बाहर बाहर गार्डन बना दिया. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. 25 into 25, क्योंकि साइड ऑफ द फील्ड 25 है. 25 25 625. देन एरिया ऑफ द हाउस, वो रेक्टेंगल है. लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 20 है, ब्रेथ 15 है. 20 into 15, राइट? वो मल्टीप्लाई करके आता है 300, राइट? देन एरिया ऑफ अ बॉर्डर पार्ट, दैट इज द गार्डन. वो कैसे आता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ द हाउस. उन दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ द गार्डन. एरिया ऑफ द गार्डन, दोनों के आंसर्स को माइनस करके आएगा. फील्ड का एरिया और हाउस का एरिया को माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो. सो एरिया ऑफ द गार्डन आ गया 325. बस एरिया ऑफ द गार्डन को उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो जो कॉस्ट दी हुई है आपको. 55 into 325, यू गेट दी टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन. जो गार्डन को डेवलप करने में मिसेस कौशिक का जो खर्चा लगा, जो कॉस्ट लगी है, दैट इज दिस मच. आई होप इट्स क्लियर.